अस्सलाम वालेकुम माय डियर कोलीग्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने रेगुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। To make video lecture for online teaching, we need to first of all make a PowerPoint presentation. Then we need to record a narration in that presentation and then convert that PowerPoint into a video. To make a video lecture, any PowerPoint presentation which you have prepared for your regular class would do. The only concern might be कि आपकी जो PowerPoint presentation है it should not be too long. क्योंकि जो recommended time है एक recorded lecture के लिए वो 12 to 15 minutes है, क्योंकि इससे लंबी duration के लिए आपके students may not retain their attention when we are not having personal interaction with them like in a regular class. Secondly, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जो है उसको डाउनलोड और अपलोड करना might be a problem for you as well as your students. लेकिन अगर आपकी जो रेगुलर PowerPoint presentation जो आपने प्रिपेयर की हुई है is too long, तो you may divide it into smaller presentation, और इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ 15 slide presentations for those presentations जहाँ पर के आपका ज़्यादातर slides जो हैं वो text slides हैं. With this presumption कि on average you will need 1 minute to explain एक slide के ऊपर लिखे हुए contents को. आप अपनी नंबर ऑफ स्लाइड्स को कंटेंट्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंसिडरिंग के योर presentation should not be longer than 15 minutes. जब आप अपनी presentations को divide कर लेते हैं into smaller presentations, तो आप उनको logically number कर दें अपने students की convenience के लिए. Once you are satisfied with the quality of your presentation, you can record narration. To record narration, you go to slideshow on your menu bar. When you click on slideshow, it will lead you to record slideshow. When you will click on record slideshow, you will see two options: start recording from beginning and start recording from current slide. And आपको दोनों में से जो भी options आपको सूट करती है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है. आप अपनी रिकॉर्डिंग की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपकी स्लाइड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग पैनल नज़र आएगा. ये जो पैनल है, इस जैसे ये नज़र आए आप यू आर रेडी फॉर रिकॉर्डिंग योर नरेशन, यू कैन स्टार्ट विद इट. और जब आप अपनी जो भी आपने कहना है, जब आप वो कह चुकते हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, तो या तो आप अपनी माउस की मदद से नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे क्लिक करके, या फिर कीबोर्ड पर जो है वो एरो कीज को प्रेस करके आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं. और अगर आप यहाँ पर अपनी नरेशन ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एस्केप की को प्रेस करें and it will discontinue your recording. Once you have completed your narration and you review your presentation, you may feel that आपकी कुछ स्लाइड्स तो बहुत अच्छी हैं लेकिन कुछ स्लाइड्स से आप इतने मुतमिन नहीं हैं, and you wish to review those slides and edit only selected few slides rather than clear the whole narration. So the good news is we can do this. We can edit our narration on few slides without having to clear the whole narration. You must have noted कि जब आप अपनी narration complete कर लेते हैं तो आपकी slide के bottom right corner के ऊपर आपको speaker का साइन नज़र आने लग पड़ता है. किसी स्लाइड पर जो हमारी नरेशन है उसको
एडिट करने के लिए पहले हमें उस पर की गई रिकॉर्डिंग को डिलीट करना पड़ेगा या क्लियर करना पड़ेगा और फिर उस पर नई रिकॉर्डिंग जो है या नई नरेशन जो है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए पहला तरीका ये है कि आपने जो आपकी स्लाइड के राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर जो स्पीकर का आइकन है, आपने अपने माउस को उसके ऊपर लेके जाना है और उस पर मूव करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको एक प्ले पैनल जो है वो नज़र आना शुरू होगा। इस प्ले पैनल के राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आपको स्पीकर का एक छोटा सा निशान नज़र आएगा या आइकन नज़र आएगा। जब आप उस आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की शक्ल आपको नज़र आएगी और जब ये आपका वो आइकन सिलेक्ट हो जाए तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, तो आपकी नरेशन उस स्लाइड के ऊपर डिलीट हो जाएगी। The second method to clear your narration on a selected slide is also quite simple. You go to slideshow on your menu bar. You choose record slideshow. You will go to a drop down menu from where you will choose the clear. When you select clear, you will get another drop down menu, and from here you choose the clear narration on current slide. Once you select this option, आपकी current slide के ऊपर जो आपकी recorded voice है वो delete हो जाएगी या clear हो जाएगी. But if you are unhappy with the whole narration and you want to redo your narration for the whole presentation, you can use the same method to clear your narration on all slides. Once you are satisfied with the contents and quality of your narration, your PowerPoint is ready for conversion into video. To convert your PowerPoint into a video, you click on the File tab to show file options, and from there you scroll down and select the Export option, and from there you navigate to create a video option. So when you click create a video, you get to choose the preferences for your video, and there are two things we choose here, that is presentation quality and timing for the narration. As for the quality of your presentation, internet quality is recommended because it's a reasonable quality with manageable size of the file to upload and download, which would obviously be a requirement for this video. As for the timing of your slides, use recorded timings and narrations because it will save the time you have taken on each slide to narrate, as well as any other effects you have added to your slides. Once you have made your choices regarding the quality of the internet and the timing you want on each slide, you click on create video to go to the next stage. When you click on create video, a new dialog box will open. You choose the name of the file, its location, and the type of the file from the options given in this dialog box. Saving PowerPoint as a video is not instant and it may take a few minutes. It's as simple as that, and I hope that you may find this helpful in preparing your online lectures. I wish you all good luck and Assalamu alaikum.